Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to another important daily current affairs series session in which we cover the important general awareness and economic and social issues current affairs from examination point of view. And my dear future officers, today we are going to cover the important current affairs from 5 to 13th of February 2026. So I believe that you have already covered the previous current affairs sessions that we have already conducted for you. You have revised them properly, and now today you have come here for the next part of this current affairs session, that is 5 to 13th of February 2026. So if I am audible and visible to all of you guys, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. So again, today we are going to cover one of the very important current affairs that were there in the previous some days that we are going to cover, right? And I believe that we are good to go with the today's session. So hi Hulk, Shreya and all other people who have joined us live today in this session. So let me first share with you the list of topics that we are going to cover in the today's session, which includes Network Readiness Index, Corruption Perception Index, Global Soft Power Index. So there are some indexes you can see which are the topics of the today's session, followed by India joining the BRICS Center for Industrial Competencies, Digital Expansion of India and the Global Teacher Prize 2026. So these are the 6 topics that I have brought here for all of you for the examination, and these are some of the reports that we will be covering in the today's session. So guys, let's start the today's session with the very first topic. The first topic here is the Network Readiness Index 2025, which has been prepared by Portland Institute, which is based in the Washington DC. My dear friends, let me tell you that whenever we cover any report, we are required to cover it across the 5 important dimensions. The first dimension is the releasing body. Second dimension is about section of the report, that what exactly are the different indicators and parameters which are being used to assess the subjects under the report. Then third important thing is the key findings, then key important rankings, and then followed by the key recommendations. So these are the 5 dimensions that we are required to cover whenever we are covering any report, right? So now the first dimension of this report is, it has been prepared by Portland Institute, which is based in Washington DC. We are talking about Network Readiness Index 2025, right? So guys, basically this report assesses that how the economies across the world are using the technology, how well they are ready to use these technologies, and how efficiently they are using these technologies. Let me give you an example of the same. Like, let's take an example. We at EduTap, through the system of technology, right? And by using the internet, by using the medium of internet and the YouTube, we are basically conducting this particular session that you are basically ready to see on your mobile phones. So all of us are using the technology for conducting the session, and you are using it for watching the session, right? So that is the power of technology. So how well these economies across the world are using this power, and are they really ready? Are they really ready to use this power in a very efficient manner? That's what this particular report tells us about in the Network Readiness Index 2025, right? As you can see, it's titled as AI Governance in a Global Context, Policy and Regulatory Approaches. I believe that the context is very much clear to all of you. As you can see here, इस साल की जो रिपोर्ट है एग्जामिन करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ पाइवोटल फोर्स reshaping how societies function, how economies compete and how individuals connect. कैसे हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे हम compete कर रहे हैं, apart from that कैसे societies function कर रही हैं. All these things are being catered under the Network Readiness Index 2025. Now coming to this part, this report also provides insights into the regulatory responses and the policy innovations. किस तरीके से हम networks को दोस्तों रेगुलेट करते हैं, क्या हमारे पॉलिसी इंटरवेंशंस है इन ऑर्डर टू रेगुलेट देम एंड टू एंश्योर दैट दे आर हेल्पिंग अस टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट दैट वी आर एमिंग टू अचीव, राइट? सो दैट्स हाउ these things are being told by this particular report. Apart from that, it tells us about the critical importance of regulatory readiness in our increasingly interconnected and AI-driven world. You all know that right now artificial intelligence is playing a very important role. We are using AI in so many factors, right? Like even you are using the artificial intelligence. Sometimes you're using the ChatGPT for summarizing the big data articles for your own, right? Sometimes you are practicing the descriptive questions and you are evaluating the answers with the help of ChatGPT, right? So basically, we are now in this world where AI is really being used at a very large scale, right? So basically, how exactly we are using it, how much ready we are. So that's what this report will be telling us about in this particular session.
Now moving ahead, so when it comes to this report basically maps down the network based readiness landscapes of the economies on the basis of 4 pillars. तो 4 pillars के across हम आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं कंट्रीज की परफॉर्मेंस को. Now what exactly these pillars are? These pillars include technology, people, governance and impact. So दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है technology, then the people which basically includes you, me and all the people, right? Apart from that, the governance, then impact. So across these 4 pillars, we are assessing the readiness level of the economies across the world, right? So now these are the indicators which are further here, like access, content, future technologies, individuals, businesses, governments. Are we really required to cover them? No. We are only required to remember that these are the 4 pillars of this network readiness index. So what are the 4 pillars? TPGI, that is technology, people, governance and impact. That is the right answer. I hope this is clear to all of you. So Hulk, we will be taking your query at the end of the session. Do not worry about it. Right now, just try to focus on this particular topic that we are discussing right now. Okay. So these are the 4 pillars of network readiness index. Now moving ahead, whenever we talk about the reports, we always tell you that wherever there is a ranking, we are required to cover some important areas of the ranking. That is, which are the top 5 countries, then what is the India's position, what is the lowest ranked country, right? So guys, let me tell you here that right now we were discussing about the network readiness index and we identified that what is the readiness level of these economies across the network readiness, and now we will see that which country is on the top. And you can see here that United States of America has topped this particular report with a score of 79.13 and it has been ranked first. So USA is on the top, followed by Finland, Singapore, Denmark and Sweden. USA, Finland, Singapore, Denmark, Sweden, these are the top 5 countries in the network readiness index. Okay, moving ahead, coming to the worst performing countries, here at the bottom you can see here Burundi is at the bottom at a position of 127 with a score of 14.76, right? So you can see here, now comes the most important part, and what's that? That is India's ranking. What is India's position in this particular index? It is very, very important from exam point of view. So India has been placed on the 45th position with a score of 54.43. दोस्तों, हमने already पढ़ा that there are 4 pillars under the network readiness index. What they were? TPGI, right? Technology, people, governance and impact. तो उन्हीं के across अब इंडिया की क्या rankings हैं, ये भी हम देख लेते हैं. So pillars के अंदर देखें हम तो टेक्नोलॉजी में इंडिया की रैंक है 33, पीपल में है 34, गवर्नेंस में है 73 एंड इंपैक्ट में है 42. और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन 4 पिलर्स की, सो क्या हमें इनकी रैंकिंग्स तो याद करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटेन देयर रैंकिंग्स. दिस इज ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, दैट्स इट. What you are required to remember is USA is on the top, India is on the 45th position, Burundi is at the bottom, right? And what are the top 5 countries? USA, Finland, Singapore, Denmark and Sweden. These are the top 5 countries in the network readiness index that we are required to cover from exam point of view. I hope that these rankings are quite very much clear to all of you. Now let's move ahead to the other important key findings from the report. So this report states that India ने अपनी position को यहाँ improve किया है and India has now come 45th rank. तो पहले इंडिया पीछे था दोस्तों, 4 places इंडिया ने jump किया इस ranking के अंदर और now India is ranked at 45th position. तो इंडिया ने अपनी ranking को improve किया और इंडिया ने first rank achieve की है in the following areas, which includes annual investment in telecommunication services, AI scientific publications, ICT services exports, e-commerce legislation. So across these 4 areas, basically India has achieved top position in this particular rank, right? So please note down these areas. Apart from that, please ensure that what exactly is the India's rank. I hope that all these things are very much clear to all of you. Now, if I ask you the question, what is the name of the organization which has released this report? Can anybody tell me the right answer? What is the right answer here? Right answer is Portolan Institute, right? What is the country which is on the top? It is USA. What is the rank of India here? It is 45. What are the 4 pillars across which the network readiness levels are being assessed across the economies? These are TPGI, technology, people, governance and impact. So these are the 4 pillars of this network readiness index. I believe that we have not just covered this report, we have understand the report, we have retained the important dimensions of the report, right?
I hope this report is very much clear to everyone, and I can see in the chat box Yoganshi, Hulk, all the people have given me the right answer to all these questions that I have just asked all of you. Now let's move ahead to the next important report of the today's session, and that is, so before moving on to that guys, there is some more additional part that we need to cover. Sorry to that we skipped that. So India has a greater network readiness than would be expected given its the income level, right? तो कुछ पार्ट और है इस रिपोर्ट का, ठीक है. सो इंडिया, अगर हम इंडिया के इनकम लेवल्स को देखें और बाकी के वर्ल्ड लेवल की जो कंट्रीज है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनके इनकम लेवल को देखें तो इंडिया का इनकम लेवल कम है, राइट? बट स्टिल इंडिया की परफॉर्मेंस यहां पर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दोस कंट्रीज. इंडिया सेकंड नंबर पर था इन द ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. और रीजनल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो सिंगापुर एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर द ओनली कंट्रीज जिन्होंने जो टॉप 10 के अंदर थी. तो टॉप 10 के अंदर हमारी रीजनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगापुर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ही है जो एशियन कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर थी. क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कवर हियर, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट जब हम बात करते हैं टॉप 10 परफॉर्मर्स की फ्रॉम दिस रिपोर्ट, तो उन टॉप 10 परफॉर्मर्स में इवन कंसिडरिंग द प्रीवियस एडिशंस ऑफ द रिपोर्ट, सो तीन चीजें काफी कॉमन आई हैं. वो तीन चीजें क्या है? पहली चीज है कि वो कंसिस्टेंटली हाई इनकम इकोनॉमीज रही हैं. सेकेंड थिंग इज दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रॉबस्ट नेटवर्क रेडीनेस अक्रॉस ऑल द डायमेंशंस. थर्ड थिंग इज द यूरोपियन कंट्रीज कंटिन्यू टू डोमिनेट द लिस्ट. तो यूरोपियन कंट्रीज आप देख सकते हैं, जब हमने टॉप 10 परफॉर्मर्स देखे तो वहां पर यूरोपियन कंट्रीज वर डोमिनेटिंग द लिस्ट. मूविंग अहेड, इन्होंने एक रॉबस्ट नेटवर्क रेडीनेस यहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया. थर्ड थिंग इज वो हाई इनकम इकोनॉमीज रही. सो बेसिकली अगर ये तीन पैरामीटर्स किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए ट्रू होते हैं, देन इट विल बी इन द अमंग द टॉप 10 परफॉर्मर्स ऑफ द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को? तो काफी अच्छे से हमने इस रिपोर्ट को कवर कर लिया है. अब बढ़ते हैं अपने अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की तरफ दोस्तों, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. सो गाइस, किस तरीके से हम परसीव करते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी करप्शन है, नहीं है. और जब हम सिर्फ अपनी कंट्री को ही नहीं, बल्कि व्हेन वी आर असेसिंग द इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट अगेंस्ट दिस करप्शन परसेप्शन, देन वी बेसिकली टू आइडेंटिफाई दैट वी रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. दोस्तों, करप्शन जहां नहीं होगा वहां क्या होगा? वहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी, और इसीलिए इसको रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी विच रिलीजेस द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. करप्शन क्या है दोस्तों? करप्शन बेसिकली इज द अब्यूज ऑफ entrusted power for the private gain. When there is a person who is in the authority, who is having the power, and he misuses the power, instead of doing the right thing, he is basically misusing the power for the private gain. That we call corruption. ठीक है? करप्शन आई थिंक आप सभी को क्लियर है क्या है करप्शन. सो बेसिकली करप्शन परसेप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए 1995 में रिलीज किया गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. ठीक है? और इसको हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कंट्रीज को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100. ठीक है जी? सो आप देख सकते हैं जहां पर 100 अगर किसी कंट्री का स्कोर 100 के पास है, इसका मतलब है वो कंट्री काफी क्लीन है. और अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 की तरफ है, दैट मींस दैट कंट्री इज हाईली करप्टेड. सो यू कैन सी हियर दैट 0 इज हाईली करप्टेड, 100 इज वेरी क्लीन. Now let's move ahead and see that what are the important rankings of this particular report, right? So let's move ahead. So here you can see that Denmark has basically topped the report, followed by Finland, Singapore, New Zealand. अगर हम बात करें दोस्तों, so first 3 positions पर आप देख सकते हैं, it is DFS, Denmark, Finland and Singapore. But on the 4th position, there are 2 countries which are New Zealand and Norway. On the 6th पोजीशन, क्योंकि हमने 5th को स्किप किया यहां पर, क्यों? क्योंकि 4th नंबर पर ऑलरेडी हमारी 2 कंट्रीज थी. तो 6th पोजीशन पर आती हैं स्वीडन और स्विट्जरलैंड, राइट? अगर हम बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज की, तो यहां पर 2 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा हाईली करप्टेड हैं, एंड दीज कंट्रीज आर सोमालिया एंड साउथ सुडान. तो सोमालिया और साउथ सुडान हमारी 2 सबसे ज्यादा हाईली करप्टेड कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. क्लियर टू एवरीवन? So Denmark is on the top. Now I already told you that whenever we are covering any ranking, we have to understand that what is the rank of India. So what is India's position? India with a score of 39 has been ranked 91 in this particular report. तो लास्ट ईयर से इंडिया का स्कोर +1 पॉइंट से चेंज हुआ है. लास्ट ईयर इंडिया का स्कोर 38 था, दिस ईयर इंडिया स्कोर इज 39,
राइट। इंडियाज पोजीशन इज बेसिकली 91। हम बात करें दोस्तों ग्लोबल एवरेज की, तो ये ग्लोबल एवरेज है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्केल है ये ग्लोबल एवरेज का है। इंडिया इज ऑन टू द लेफ्ट, दैट मींस इंडिया की परफॉर्मेंस इज बिलो द ग्लोबल एवरेज, राइट। सो यहां पर हम देख सकते हैं, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज ऑन द 30, इंडिया इज प्लेस्ड बेसिकली ऑन 91st रैंक विथ 39 स्कोर। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज थी जो इंडिया के साथ इसी पोजीशन पर प्लेस थी? इट इंक्लूड्स अल्बानिया, मालदीव्स, मोरक्को एंड ट्यूनिशिया। क्या हम इनका नाम याद रखना है? काफी रेयर केस है कि इनका नाम आएगा एग्जाम में। मेजरली में याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है? 91। इंडिया का स्कोर क्या है? 39। कितना इंप्रूव हुआ? 1 पॉइंट से इंप्रूव हुआ फ्रॉम द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर स्कोर वाज 38, दिस ईयर स्कोर इज 39। On the top it is Denmark, followed by Finland and Singapore on the second and third position. So that's what we are required to understand, retain from the examination point of view, right? I hope this is clear to everyone. बिल्कुल सही, everybody has given the right answer to this part. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Now you can see here that the global average of the corruption perception index has fallen. तो अभी तक का सबसे लोएस्ट स्कोर पर हम पहुंच चुके हैं एट अ ग्लोबल लेवल। अगर हम बात करें व्हाट इज द लेवल ऑफ करप्शन एट अ global scale, it is at its lowest till now. So you can see here the score is 42, while it is more than 2/3 of the countries score below 50. आप देख सकते हैं global average has fallen to a new low of 42. करप्शन की बात करें तो ये अभी भी एक बहुत ही सीरियस थ्रेट बना हुआ है टू ऑल द इकोनॉमीज, राइट। एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड करप्शन रिमेन्स अ सीरियस थ्रेट फॉर द पीपल। 31 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रिड्यूस किया अपने करप्शन लेवल्स को, राइट। इन्होंने रिड्यूस किया अपने करप्शन लेवल्स को सिंस 2012, बट जो बाकी के कंट्रीज की बात की जाए वो अभी तक इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए हैं एंड देयर स्कोर इज रियली डिक्रीजिंग। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर स्कोर, दे आर डिक्रीजिंग देयर स्कोर्स। इंडिया के स्कोर की हमने बात की, 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ फ्रॉम 38 in last year to 39 in 2025 and India's rank was 91. India was placed on 91th position with 4 different countries, right? बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं which are scored below the global average of 42 and this group includes India, बांग्लादेश and इंडोनेशिया। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज इस रीजन की 42 से कम स्कोर है उनका। 42 was the global average, इंडिया का हमने पढ़ा ऑलरेडी 39 है। सो इनका स्कोर याद नहीं रखना, बट याद रखिए बांग्लादेश और इंडोनेशिया भी इंडिया के साथ ही 42 से कम स्कोर वाली कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। Corruption worsened even in the advanced democracies as the number of countries scoring above 80 has decreased from 12 a decade ago to just 5 this year. दोस्तों हम काफी बार देखते हैं कि हमारे पास यहाँ करप्शन से रिलेटेड काफी स्कैम्स आते हैं, राइट। और हमेशा जब भी हम वो ऐसी खबरें देखते हैं तो we basically get sad that why exactly these things are happening, why exactly people are basically doing such kind of corruption, right? जब लोग अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं अपने प्राइवेट गेन के लिए, उसको हम करप्शन कहते हैं। तो ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि अक्रॉस वर्ल्ड ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक सीरियस थ्रेट है। और यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सबसे लीस्ट करप्टेड कंट्री की, दैट इज डेनमार्क अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, जो सबसे हाईली करप्टेड है, दैट इज साउथ सुडान एंड सोमालिया। इंडिया की पोजीशन की हमने बात की, इंडियाज रैंक इज 91 विद द स्कोर ऑफ 39। और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है दोस्तों? आई ऑलरेडी गिव यू द वे दैट यू कैन रिटेन दैट पार्ट। जब करप्शन नहीं होगी तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होगी। सो द बॉडी विच रिलीजेस द रिपोर्ट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर? If I ask you that what exactly is the rank of India in this report, what it will be? It will be 91. ठीक है? What was India's score last year? India's score was 38 last year. What is the global average score in the corruption perception index? It was 42. And if I ask you what is the name of the body which releases this report, it is Transparency International. सभी को याद हो गया दोस्तों? If yes, please give me a thumbs up in the chat box so that I can ensure that yes, you have understood this particular report in a very detailed manner. And now we are ready to move ahead to the next part of this particular session. So I can see in the chat box that yes, everybody is giving me the answers correctly, and that shows that yes, your understanding level is really good for the today's report. Now let's move on to the third report of the today's session, and that is Global Soft Power Index 2026. दोस्तों ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं कंट्रीज के, राइट, उनके इन्फ्लुएंसिंग पावर को असेस करता है। अब ये कैसे असेस करते हैं दोस्तों? देखिए बताते हैं। देखिए सॉफ्ट पावर क्या होती है? जब भी आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं
इन्फ्लुएंस कर लेते हैं टू डू समथिंग दैट यू वांट देम टू डू, राइट? सो बेसिकली दैट व्हाट वी कॉल सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर में क्या आएगा दोस्तों, देखो दो तरीके होते हैं क्या, एक तो ये कि आप किसी को प्यार से समझाइए, उसको कन्विंस कीजिए वो काम करने के लिए, और दूसरा है आप अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, किसी को थ्रेटन करके भी आप वो काम करवा सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमें पनिशमेंट के नाम पर हमसे सारी सही चीजें कराई जाती थी, ठीक है, कि अगर ये नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, राइट? तो वो पावर का इस्तेमाल ना करके सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल करना, सॉफ्ट पावर मतलब कि अपनी कन्विंसिंग पावर्स का इस्तेमाल करना, प्यार से और लॉजिकली उन कंक्लूजन तक पहुंचाना उस पर्सन को, उससे वो एक्शंस कराना, दैट कम्स अंडर द सॉफ्ट पावर। सो इट इज द कंट्रीज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू अट्रैक्शन एंड परसुएजन रेदर देन कोअर्जन। कोअर्जन में क्या आता है दोस्तों, आपकी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक प्रेशर्स लगाना, किसी के टैरिफ रेट्स इंक्रीज कर देना, राइट? किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा देना, दिस कम्स अंडर द कोअर्जन पावर। परसुएशन में क्या आएगा, परसुएशन में दोस्तों आएगा जब आप अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाकर किसी और कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड कर लो, राइट? देन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में क्या है, अट्रैक्शन में है बेसिकली आप थ्रू द कल्चर आप कर सकते हैं, लाइक काफी सारी मूवीज के साथ कर सकते हो, अपने म्यूजिक के साथ कर सकते हो, डांसेस के साथ कर सकते हो, ठीक है? सो दैट इज हाउ यू इन्फ्लुएंस द थिंग्स, राइट? सो बेसिकली दैट्स व्हाट इन विच वी डिस्कस इन द सॉफ्ट पावर। सो ये जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में किसकी क्या पोजीशन है, क्या रैंकिंग है, ये हम कवर करेंगे आज के सेशन के अंदर, ठीक है जी? सो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स रिलीज किसने किया, ब्रांड फाइनेंस ने रिलीज किया। सभी 193 मेंबर स्टेट्स को यहां रैंक किया गया है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब बात करते हैं हमारे कि किस तरीके से, व्हाट एग्जैक्टली आर द एरियाज अक्रॉस विच वी आइडेंटिफाई एंड वी असेस द कंट्रीज। सो बेसिकली देयर आर की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स which are been included for the assessment of the countries। तो पहली चीज है फैमिलियरिटी, कि कोई कंट्री कितना अच्छे तरीके से जाना जाता है, हाउ वेल नोन दैट कंट्री इज। रेप्यूटेशन, उस कंट्री की कैसे रेप्यूटेशन है, राइट? देन इन्फ्लुएंस, हाउ मच अ नेशन इज परसीव्ड टू इन्फ्लुएंस अदर नेशंस। सो इन 3 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्दर हम असेस करते हैं कंट्रीज को अक्रॉस द 8 पिलर्स। नाउ व्हाट दीज 8 पिलर्स आर, these include business and trade, international relations, education and science, culture and heritage, governance, media and communication, sustainable future, people and values। तो ये टोटल 8 डिफरेंट पिलर्स हैं जिसके अंडर हम कंट्रीज को असेस करते हैं और उनको पोजीशन करते हैं कि ठीक है किसकी ज्यादा सॉफ्ट पावर है, ठीक है जी? क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स की। सो दोस्तों यहां पर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं टॉप परफॉर्मिंग नेशन की, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स विच इज ऑन द टॉप विद द स्कोर ऑफ 74.9। अगर हम बात करें यूएसए की दोस्तों, तो शार्पेस्ट डिक्लाइन यहां पर यूएसए की परफॉर्मेंस में देखने को मिला। आप देख सकते हैं -4.6 पॉइंट्स का यहां डिक्लाइन हमें देखने को मिला है इन द परफॉर्मेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय चाइना ऑन द सेकंड पोजीशन, जापान ऑन थर्ड, यूके ऑन फोर्थ एंड जर्मनी ऑन फिफ्थ। So US, China, Japan, UK and Germany, these are the top 5 countries in the global soft power index. Now what about India? I told you that India is really very important here. So India के केस में दोस्तों आप देख सकते हैं that India was ranked 32nd with a score of 48.0। तो 48 के स्कोर के साथ इंडिया 32nd पोजीशन पर था और 2 पोजीशन इंडिया की रैंक यहां पर डिक्रीज हुई है फ्रॉम द लास्ट ईयर। और दोस्तों यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड आप सब देख सकते हैं कि काफी जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट? और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए जा रहे हैं। सो बेसिकली ये सभी चीजें अनसर्टेन बनाती हैं हमारे एनवायरनमेंट को। सो दैट इज व्हाई द ऑनगोइंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैव लेड टू डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट। लोगों का विश्वास यहां पर गिर रहा है, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। सो यहां पर टॉप पर कौन है? यूएसए है। इंडिया की पोजीशन क्या है? 32nd इज द इंडियाज पोजीशन इन दिस रिपोर्ट। सो गाइस आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट भी सभी को क्लियर है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। सो इंडिया हैज जॉइंड ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। सो दोस्तों बीसीआईसी ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज, ये एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर है जहां से हम अपने एमएसएमईज की ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और ये इस सेंटर को अब इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। दिस सेंटर वाज बेसिकली बीन क्रिएटेड फॉर द ब्रिक्स कंट्रीज।
सो इंडिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। इसको लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद द यूएनआईडीओ, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के साथ बीसीआईएस को लॉन्च किया गया था और अब इंडिया ने ज्वाइन किया है बीसीआईसी को फॉर्मली। ठीक है, ये एक वन स्टॉप सेंटर है जो एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को और एमएसएमईज को। सो जो हमारी एमएसएमईज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सो उनको यहां पर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है बीसीआईसी और वो खुद को और ज्यादा बेहतर तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं दीज एमएसएमईज। बट यहां पर एक रूल क्या है, ये सभी एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहां से होंगी, ब्रिक्स कंट्रीज से बिलोंग करती होंगी। ठीक है, इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री 4.0 कॉम्पिटेंसीज। दोस्तों इंडस्ट्री 4.0 में क्या करते हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन of the industries through the digital innovative technologies like artificial intelligence, IoT, cloud computing, right? तो इसके हेल्प से हम अपनी इंडस्ट्रीज को और स्केल अप करना चाहते हैं। नाउ अब बात करें दोस्तों, सो जब भी एक कोई कंट्री इसका मेंबर बनता है, सो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया जाता है एज द सेंटर फॉर बीसीआईसी। तो इंडिया के लिए वो सेंटर फॉर बीसीआईसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो बेसिकली एक मीडियम होगी यहां। सो दैट विल बी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। हम क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं एमएसएमईज की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। सो दैट्स हाउ वी विल बी डूइंग दैट। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडिया सेंटर फॉर ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज अंडर द पॉलिसी गाइडेंस ऑफ डीपीआईटी एंड द टेक्निकल सपोर्ट। एनपीसी will spearhead India's engagement with the BCIC। So दोस्तों जो भी एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट है हमारी एमएसएमईज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए with the BCIC, that will be led by the National Productivity Council। क्लियर टू एवरीवन? सो दोस्तों यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द बीसीआईएस, which is the one stop solution center for the MSMEs and manufacturing companies of the BRICS countries? What will be the right answer? Right answer will be India. And what is the name of that body which has been designated as India Center for BRICS Center for Industrial Competencies? What is the name of that organization? Please tell me in the chat box. That organization name is National Productivity Council। NPC is the right answer to that question। ठीक है, so clear है सभी को? Everything is clear to everyone? Okay, in the chat box also everybody has given me the right answer. Let's move on to the next news article of the today's session, and the next article here is India's digital expansion and 6G vision। दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, so we have moved on successfully from 4G to 5G। पहले 2G चलाते थे, 2G से 3G पे आए, 3G से 4G पे आए, अब 4G से 5G पर आ चुके हैं। काफी majority of the population is basically using the 5G devices right now and the 5G network, right? We are under the 5G network, right? So basically अब हमारा आगे का क्या प्लान है? So that's what we are going to discuss here in this particular topic here. So government of India is aiming to equip 1 billion citizens with 5G connectivity by 2030। तो दोस्तों देखिए 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है, मगर सबके पास 5G डिवाइसेस नहीं है। 5G डिवाइसेस कुछ साल पहले आने शुरू हुए थे, राइट? तो 3-4 साल पहले तक 5G डिवाइसेस आने शुरू हुए, फिर वो डिफरेंट बैंड्स के अंदर आए हमारे डिवाइसेस, सो दैट कि सभी बैंड्स हम अवेलेबल कराए गए, सो दैट जो बैंड वहां पर एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, वो डिवाइस उस पर्टिकुलर बैंड को कनेक्ट करके 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा सकता है आपके डिवाइस के ऊपर, राइट? सो बेसिकली अभी भी सभी लोग 5G का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना? सो इसीलिए गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि क्यों ना हम सारे टारगेट से 2030 तक बनाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 2030 तक है, तो क्यों ना 1 बिलियन सिटीजंस को 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने का टारगेट भी हम 2030 तक रखते हैं, और यही टारगेट हमने अब सेट कर लिया है अपने आप के लिए। ठीक है, इंडिया इज रोल्ड आउट 5G एट द फास्टेस्ट पेस इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कैसे 22 मंथ्स के अंदर 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया 99.9% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। इंडिया के 99.9% डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। पीपल आर कवर्ड अंडर द नेटवर्क ऑफ 5G सर्विसेज। दोस्तों आप इवन इन द रिमोटेस्ट एरियाज में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि 5G सर्विसेज वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र रैंक्ड अमंग द टॉप स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट डिप्लॉयमेंट। दोस्तों जहां पर लोगों को वाईफाई की जरूरत है, राइट, तो महाराष्ट्र में क्या किया गया, वहां पर सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए गए लोगों के लिए, सो दैट
कहीं पर भी आपको कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र। By 2030, government aims to further deepen and strengthen digital infrastructure across India। दोस्तों सबसे पहले देखिए टेक्नोलॉजी आती है, नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, आप अभी इंटरनेट के थ्रू इस सेशन को देख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जाए इन द अपकमिंग टाइमलाइन। तो 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम इसको और स्ट्रॉन्ग और डीप बनाने वाले हैं in the upcoming timeline, right? So these are the targets now from this particular slide. What can be the probable question which can be asked? Question number 1, that what exactly is India's target to achieve in terms of 5G connectivity by 2030? What will be the right answer? Please tell me in the chat box. The right answer will be 1 billion citizens, right? Apart from that, India ने दोस्तों recently, you have to tell me the name of the state which is ranked highest in terms of highest deployment of Wi-Fi hotspots in the state. What will be the name of that state? Quickly tell me in the chat box. The name of the state is Maharashtra. Maharashtra is the right answer. Absolutely right. So these are the two probable questions which can be asked in the exam. I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन के आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, that is the Global Teacher Prize 2026. So the Global Teacher Prize was been recently awarded during the World Government Summits taking place in Dubai, UAE. Now जब भी कोई प्राइज आता है दोस्तों, किसी न किसी को मिलता है, किसको मिला ये काफी जरूरी है, क्यों मिला ये भी काफी जरूरी है, राइट? सो किसको मिला है ये प्राइज? द नेम ऑफ द पर्सन इज रूबल नागी। रूबल नागी इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये पहली इंडियन वुमेन बन चुकी हैं और सेकेंड इंडियन पर्सन है हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, राइट? तो ग्लोबल टीचर प्राइज इससे पहले बस एक ही पर्सन को मिला था और अब इंडिया से बेसिकली, राइट? और अब ये सेकेंड इंडियन बन चुकी हैं रूबल नागी। कहां से हैं? जम्मू और कश्मीर से हैं। और अगर हम बात करें इस अवार्ड की, इस अवार्ड को नोबल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है दोस्तों। सो द एडुकेटर्स हु रियली give a very good contribution to the society, so basically इनको ये award दिया जाता है। You can see here it honors an educator who has made an outstanding contribution to the profession, so that person has been given this particular award. इससे पहले ये award दोस्तों रंजीत सिंह दिसले को मिला था 2020 के अंदर। तो रंजीत सिंह दिसले was been given this award in 2020 and now Rubal Nagi has been conferred with this particular award. Please remember the name Rubal Nagi, that is the right answer here. Absolutely right. So guys, with this we are done with all the important topics from the today's session, and I always tell you that just covering the topics, is it sufficient or not? Answer is clear no. If you are not practicing the MCQs, that means you are not assessing yourself, you are not analyzing your retention levels from the examination point of view, because in the exam you are required to solve the MCQs. That's why it is very important for you to ensure that you are solving the MCQs, and that's why for your practice I have brought up here the questions from the today's session. And here now I want all of you to participate in this particular session. So here is the first question for all of you. The first question on the corruption perception index, which is reported in the February 2026. You need to identify which of the following statements are correct. So guys, I always tell you that whenever you are solving such kind of three statement question, please follow a 3-step rule. Rule number 1 is to identify the central topic of the question. Rule number 2, identify the demand of the question. Rule number 3 is to analyze the keywords, right? So यहाँ पर central topic क्या है? It is the name of the report, that is corruption perception index. What is the demand of the question? What you are required to do? You are required to identify the correct statements. Now we have to identify, we have to analyze the keywords, that whether they are basically mentioned here correctly or not. तो बढ़ते हैं अपने पहली स्टेटमेंट की तरफ। डेनमार्क सिक्योर द टॉप रैंक। डेनमार्क टॉप रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर ऑफ 89। इज इट स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। हमने देखा कि डेनमार्क इज द लीस्ट करप्टेड नेशन। सेकंड स्टेटमेंट, ग्लोबल एवरेज स्कोर क्या है दोस्तों? इट इज 42 और ये हमेशा हिस्टोरिकली लो स्कोर रहा है। बिल्कुल सही। सो दिस विल बी द राइट आंसर and will have more than 2/3 of the countries score below 50. तो 2/3 से ज्यादा कंट्रीज का स्कोर below 50 था, ये भी हमने कवर किया। ग्लोबल एवरेज 42 था, ये भी हमने कवर किया। So this statement is also right. Moving to the third statement, India's score is 39 and India's rank is 91 in this particular report. Is it right or wrong? This statement is again correct. So what will be the right answer? All these statements are correct. Right answer will be option D, that is 1, 2 and 3.
तो किस किसने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर? आई कैन सी हियर हल्क Shreya Gupta has answered me correctly for this particular question. Well done, guys. So that's how we are required to solve this question. I believe कि अब सबको पता चल गया how to solve such kind of questions, right? From the exam point of view. और किस लाइन पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो दोस्तों इसको प्लीज डी कर लीजिएगा. It is not C, it is D. I will be correcting it in the PDF also. Okay. Moving to the next question. Global Soft Power Index released in February 2026, right? तो यहां पर दो चीजें आपको बतानी है. You can see the question is across the two blanks. First of all, what is the rank of India? India ranked dash, and while the dash recorded the sharpest decline among all 193 brands in the ranking. So आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या है और दूसरा किस कंट्री को sharpest decline देखने को मिला in the global soft power index. We have already covered this part in the today's session. Please tell me here what is the right answer. Kindly confirm the right answer. What is the India's rank? India's rank was 32 in this rank, in this particular index. And what is the name of the country which is basically, which has seen the sharpest decline in the score? That is USA. So option D will be the right answer. Option D is the right answer. 32nd and US is the right answer to this question. Absolutely right. Now the next question, in the Global Soft Power Index, which ranks all 193 member states of the US, United Nations, which one of the following countries does not belong to the top 5 countries? दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है आपका टॉप 5 कंट्रीज से कौन सी कंट्री बिलोंग नहीं करती है. देखिए किसी भी इंडेक्स की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि एज पर द रीसेंट एग्जाम ट्रेंड्स टॉप 5 परफॉर्मर्स के बारे में पूछा जाता है. अब आपको बताना है कि कौन सी कंट्री टॉप 5 का हिस्सा नहीं है. टॉप 5 की हम बात कर रहे हैं यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस. तो कौन सी कंट्री टॉप 5 का हिस्सा नहीं है आपको बताना है. क्या यूएस पार्ट था? बिल्कुल था. यूएस इज द राइट आंसर. यूएस इज नॉट द राइट आंसर. यूएस इज करेक्टली प्लेस्ड देयर. दैट्स गुड. देन चाइना वाज देयर. यस. जापान वाज देयर. यस. जर्मनी वाज देयर. यस. वाज फ्रांस देयर? क्या फ्रांस वहां पर था? आंसर इज नो. इसके अलावा कौन सा कंट्री था दोस्तों? सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो ये थी. फोर्थ नंबर पर आता है आपका यूनाइटेड किंगडम और फिफ्थ पर आता है जर्मनी. सो फ्रांस इज दैट country which is not the part of the top 5 economies, right? So this is the right answer. Option E is the right answer to this question. Absolutely right. Now moving to the next question. In February 2026, Dash joined the BRICS Center for Industrial Competencies, and the Dash has been designated as the India Center for BRICS Industrial Competencies. So आपको बताना है सबसे पहले किस कंट्री ने यहां पर ज्वाइन किया और दूसरा कौन सा सेंटर बनाया, कौन सी बॉडी को इसका सेंटर यहां पर चूज किया गया है. So what is the name of that country which has joined it? It is India. And what is the name of that body which is the India Center for BRICS Competencies? That is NPC. So India and National Productivity Council is the right answer. Option B is the right answer to this question. I can see in the chat box most of the people are giving me the right answer, and that shows your dedication and commitment कि हाँ हमने सेशन को सिर्फ ना ही सुना, अब हम कंफर्म भी कर रहे हैं कि हमारी रिटेंशन लेवल्स कितनी अच्छी है कि हम क्वेश्चंस का आंसर भी दे पा रहे हैं. राइट. तो ऐसे ही दोस्तों हमें करना है एग्जाम के लिए भी, बार बार चीजों को रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, कवर करना है, रिवाइज करना है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने. द क्वेश्चन हियर इज ऑन द विद रेफरेंस टू इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन initiative as reported in February 2026, consider the following statements. Again, kindly try to use the 3-step rule here. Statement number 1, government aims to 1 billion citizens with 5G connectivity by 2030. Is it right or wrong? This is absolutely right. Second statement, 22 months में 5G services को launch किया 99.9% of the districts in India. This is right or wrong? This is right. Third statement, Maharashtra has recorded the lowest number of Wi-Fi hotspots. Is this statement right or wrong? Please tell me in the chat box by saying true or false. क्या ये statement सही है या गलत है? जल्दी से बताएंगे chat box के अंदर. Third statement is absolutely incorrect. Why? Because Maharashtra has the highest number of Wi-Fi hotspots. That's why the statement is absolutely incorrect. Right answer will be option A, that is 1 and 2 only. So option A will be the right answer to this question. Absolutely right. Clear है सभी को? बिल्कुल सही. I can see here Yogansh, Hulk and all the people have joined us, have basically answered the question correctly here. बिल्कुल सही जवाब दोस्तों. आप बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ. Next question is, in February 2026, a award presented at the World Government Summit in Dubai, UAE,
recognizing establishment of 800 plus learning centers across India and large scale educational moral initiatives was conferred upon which of the following। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको पूरी लाइन यहां पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा पढ़ते, क्वेश्चन का लास्ट का हिस्सा पढ़ते, यू वुड हैव बेसिकली आइडेंटिफाइड दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। लाइक यू कैन सी हियर, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पर यह अवार्ड दिया गया और किसको मिला, यही हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रूबल नागी। ऑप्शन बी रूबल नागी इज द राइट आंसर। एक हलवा क्वेश्चन था आप सभी के लिए। आई बिलीव कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया है दोस्तों। अब so that was the last question of the today's session, but this is not the end. This is not the end because we are having a homework question for all of you. Homework question here for the today's session that I want all of you to, after revision of this session, you are coming back to this session and you are answering this question in the comment section. What is the homework question here? The homework question is on the Network Readiness Index 2025. You are required to identify which of the following statements are incorrect with respect to the Network Readiness Index. तो Network Readiness Index के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, एंड द पीपल हु विल बी गिविंग मी द राइट आंसर विल बी द स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस सेशन। अगर हम बात करें दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था और काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। द क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑन द पैमाना पोर्टल। पैमाना पोर्टल पे क्वेश्चन था दोस्तों, एंड द क्वेश्चन वाज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। राइट आंसर वाज ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट हियर and that is why option A was the right answer. And here is the list of all the star performers, which includes Yoganshi, Swastik Das, Chavi, Jyoti, Velar, Sejagu, Viharip and Mani. So all these people are the star performers of our previous session. If you also want your name to be coming here, please ensure that you are mentioning your answers in the comment section. Apart from that, my dear friends, let me tell you here that, see, you know what is the utility of these homework questions and your name and bringing your name here just to encourage you to basically answer the questions. I'm not saying that when your name will be coming here, then your name will also be coming in the merit list also. No, answer is no to that. Why we are doing this? To inculcate a habit in you so that you are taking the accountability and responsibility of yourself. You are basically on daily basis, on the regular basis, you are following the sessions and you are answering the question. काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स सेशंस को देखते हैं और उसके बाद आंसर करने में हेजिटेट करते हैं, और जब आंसर करने में हेजिटेट करते हैं अभी वो चीज उनकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती है, रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती है व्हेन दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग सो मेनी एमसीक्यूज सो दैट एग्जाम के अंदर अगर एक गलती से भी कोई गलती होती है तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? So that's all from the today's session, and if you have really liked the session guys, so basically please ensure that you are you can just let us know in the comment section. Apart from that, the most important thing is the revision of the session. Please ensure to revise the session, और सेशन को YouTube से दोबारा देखने के बाद PDF की रिक्वायरमेंट भी होगी आपको। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन से आप इस पर्टिकुलर लिंक को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप हमारे सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन, एंड आई होप कि सेशन में आपको काफी मजा आया होगा। एंड योगांशी इज आस्किंग सर व्हाट आर द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस। सो बेसिकली एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे वी आर कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। तो नेक्स्ट वीक से दोस्तों ये सेशन आपके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, तो वीक में 3 बार होंगे। अभी सिर्फ 2 बार हो रहे थे, बट इस बार से नेक्स्ट वीक से ये 3 बार होंगे, राइट? ये सेशंस। तो प्लीज इंश्योर कीजिए आप अपना कीमती वक्त निकाल के रखें सेशन के लिए, सो दैट आप रेगुलर बेसिस पर अपडेटेड रह सकें टू ऑल दीज करंट अफेयर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू हियर दैट दिस प्रिपरेशन जर्नी, यू नो, आवर लाइफ हैज सो मेनी डिफरेंट चैप्टर्स, राइट? और ये जो हमारी जर्नी है ना, तो ये एग्जाम जर्नी भी एक तरीके का चैप्टर है हमारी लाइफ का, और इसकी कलम आपके हाथों में है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि अपनी डेडिकेशन, अपनी कमिटमेंट, अपने हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स, अपने टाइम जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज इंश्योर दैट वेदर इट इज अलाइंड विद योर गोल और नॉट। ठीक है? सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर स्टेइंग हेल्दी,
I will be meeting you in the upcoming part of the sessions. Till then,